Hello friends, this is a video for the EPFO upcoming exams like ESIC and for the laws related to the labor laws and industrial laws. So this first video is about the Industrial Disputes Act 1947. So in this video we'll learn why we need this industrial disputes and how they are dangerous. So they are dangerous on 4 accounts. Number 1, they can seriously hamper the productivity of the industry and of that of workforce. Second, the employee morale can be severely hampered. Third, the public perception about that industry may also be affected. For example, we have recently seen how the Apple factories were targeted in India, and it led to a perception that the Apple factory owners are not pro workforce and they are against labor force. So this can reduce the brand equity as well. Fourth, the financial losses. Obviously, when there is a lockdown, a complete protest going on in a factory, the financial losses are also severe, both for the factory owners and for the labor force. So that's why we need the Industrial Disputes Act. So this has mainly these provisions. One, it extends to the whole of India. The Industrial Disputes Act extends to the whole of India and applies to all the industries. Right? There is no nothing like that it will be applied to such kind of industries and not to the other industries. Second, it has mentioned some definitions. For example, it defines average pay, industrial disputes, etc. to avoid ambiguity. Right? For different industries may say that average pay will constitute these components. It will not include other components, and then industrial disputes may be defined as per their conveniences. So it reduces their ambiguity. Third, the compensation for the workmen. The Act provides for the payment of compensation to the workmen on account of closure, layoff or retrenchment. For example, industry might be closed or the workers may be laid off. For example, it is non-profitable, though maybe they reduce the workforce and layoff will be happening. For example, we have seen this in the ongoing layoffs in Facebook, Microsoft and other IT companies. So there is a provision of compensation. For example, in the IT industry, it is known as golden handshake. Fourth, so there is a set procedure for the laying off or the retrenching of workers. Okay? So this act provides for this procedure. The detail might be skipped for what is exactly is the procedure. It is not necessary for this upcoming examination of EPFO, APFC. So there are few committees mentioned as per this act. Number 1 is Committee for Dispute Settlement. So there might be some dispute with the industry and between the labor force. So this Industrial Disputes Act mandates the formation of a committee for dispute settlement. For example, a new dispute has arisen. For example, a new machine is there which is causing accidents. So, or for example, there may be longer working hours and a dispute kind of situation is there. So this committee is for this dispute settlement. Second is the Conciliation Committee. It focuses on the speedy dispute resolution. For example, एक dispute के अंदर तो there is a winning party and the losing party. Then we need a conciliation. In that case, there is no winner and there is no loser. The dispute is settled very speedily. So that is the Conciliation Committee. Third one is the Arbitration Committee. The Public Utility Services provides for enforcement of arbitration award. For example, एक थर्ड पार्टी के पास हम जाएंगे कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस में भी आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिस्प्यूट ऑनगोइंग in the international waters between Japan and China, right? And between the Philippines and the China is the very prime example. They went for the International Arbitration Court, and there is one arbitration award given to the Philippines. So that is we can say the end result of that dispute. As per this act, there is certain provisions for the protection of the workers. So number 1, unfair labor practices. So ये जो act होता है, it prohibits unfair labor practices by the employer, by the trade union or
वर्कर्स, तो कोई भी लेबर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता. इवन ट्रेड यूनियंस भी वर्क इन कोल्यूजन विद द मैनेजमेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री एंड दे अलाउज द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, सो इट completely restricts that. Second is the right to strike. So there are certain prohibitions on the right to strike. For example, tool down approach cannot be taken. कि भाई काम करते करते एकदम से आपने कह दिया जी अब हम काम नहीं करेंगे. तो देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर दी नोटिस पीरियड कि भाई आप अपना डिस्प्यूट क्या है, अपने आर्ग्यूमेंट्स क्या है वो रखो, फिर कंसिलिएशन कमेटी बैठेगी, फिर जाके ऑन अ सेट डेट ओनली इफ दैट प्रोसेस इज फेल्ड यू कैन गो फॉर अ स्ट्राइक. सो दैट इज़ देयर. डिसमिस्ड लेबर, तो जो एक्ट है वो कहता है कि भाई जो भी डिसमिस करा गया लेबर उसको रीच आउट करना चाहिए कि उसे उसकी इनजस्ट. फोर्थ वन इज़ द कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड द कंसिलिएशन थिंग. तो जो भी लेबर फोर्स है उनके पास एक कलेक्टिव राइट भी होता है. अभी तक तो मैंने इंडिविजुअल राइट की, अगर उनको डिसमिस करा गया तो उनसे पूछा जाए ये सब चीज़ें होती है, उनके साथ कुछ अत्याचार तो नहीं हो रहा, अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, उनका राइट ऑफ स्ट्राइक है. तो अब यहाँ पर एक होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, तो वो कलेक्टिव राइट भी दिया जाता है थ्रू ट्रेड यूनियन और उसके थ्रू कंसिलिएशन एफर्ट किए जाते हैं बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द लेबर. देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एक इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और एक लेबर का ऑब्जेक्टिव एट टाइम्स दे आर एट द कोलिजन पाथ, ठीक है. और वो हम काफ़ी टाइम हमने, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है. एक लेबर का क्या रहेगा कि मेरे को भाई कम काम करे और मेरी सैलरी पूरी टाइम से आए और मेरी लाइफ इजीली चले. तो ये दोनों कई बार क्या होता है अपोजिट रन करता है, क्योंकि मैं प्रॉफिट के चक्कर में चाहूँगा मेरा लेबर 10 घंटे भी, बट इट इज़ नॉट राइट. तो बेसिकली ये जो एक्ट है ना ये सब उसके ऊपर चल रहे हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर, कि कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिस्ट या सोशलिस्टिक साइड है इंडिया. फिर उसके बाद है पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन. अब क्या होता है कि अब ये सारे प्रोविजन दे दिए, लेकिन अगर वायलेट हुआ फिर क्या, तो उसके लिए करा नो वर्कर नो पर्सन कैन इंसाइट अदर्स टू टेक पार्ट इन अ स्ट्राइक. अगर मेरे को कोई पर्सनल ग्रज है फैक्ट्री के मालिक से, मैं ये नहीं कह सकता कि सबके सब चलो स्ट्राइक पे. देयर शुड बी सम जेन्युइननेस इन द कॉज, राइट. सो अगर ऐसा जो है इलीगल माना जाएगा एंड इट कैन इम्पोज फाइन अप टू 1000 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months और बोथ, ठीक है. सेकेंड, इलीगल स्ट्राइक. एनी वर्कमैन और हु कमेंसेस कंटिन्यूज और अदरवाइज एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ अ स्ट्राइक. जो स्ट्राइक को इलीगल घोषित कर दिया गया है उसके बाद भी आप उसको कंटिन्यू करते हो, इट कैन फेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month और बी फाइंड अप टू 50 रुपीज़. और बहुत ही सब पुराने हैं तो फिर थोड़ा सा आपको रुपीज़ में थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होगा. द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज़ नेसेसरी टूल फॉर मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रोस्पेरिटी. तो जैसे एक देश में होता है पीस ऑफ एंड प्रोस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है, वैसे एक इंडस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है. तो ये एक्ट के थ्रू वो मेंटेन करा जाता है. इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशंस फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स. थैंक यू वेरी मच. दिस इज़ द part 1 of this series, and I wish you all the best for your upcoming exams and its preparation, and I hope that you like this video. Please subscribe and like this video.